Today we are going to start the moles and stoichiometry. This is the very important topic, moles and stoichiometry. Okay, so first let's start. What is a moles? Anybody has any idea what is the moles? What is the mole? बच्चों moles केमिस्ट्री में is a calculating unit. केमिस्ट्री में ये क्या है? कैलकुलेटिंग यूनिट है. इन केमिस्ट्री आपको कुछ भी बात करनी हो तो यू टॉक अबाउट मोल्स ओनली. मिसाल देता हूं. नाउ लिसन केयरफुली. जो लोग जूम पे हैं वो भी. नॉर्मली मैं आपको कहता हूं कि जी आई नीड यू टू ब्रिंग मी द राइस, तो आप कहते हैं जी मैं 1 किलोग्राम राइस ले आया हूं, 2 किलोग्राम ले आया हूं, ऐसे ही कहते हैं. इफ आई आस्क यू टू ब्रिंग मी पेट्रोल, तो फिर आप किलोग्राम नहीं कहते. वो एक लिक्विड है, उसको किस में उसका वॉल्यूम लेंगे. तो आप लाएंगे मैं 1 लीटर ले आया हूँ, 2 लीटर ले आया हूँ. या दूध का बोलूंगा तो वो भी मैथ नहीं लोगे, वॉल्यूम लेके आओगे. 1 लीटर 2 लीटर पानी. अगर यानी कोई सॉलिड है तो उसका मैथ लेके ग्राम्स में लेके आओगे, किलोग्राम्स में. कोई लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम लोगे. इसी तरह कोई गैस है तो उसका भी वॉल्यूम लोगे. मैं आपको कहता हूँ यार नियॉन गैस ले आओ, वो बैलून जो होते हैं, तो आप वो बैलून का वॉल्यूम ला के मुझे बताओगे कि मैं कोई 100 cm³ के 10 बैलून ले आया हूँ. आप ये तो नहीं कहोगे मैं 2 किलो बैलून ले आऊं. ऐसे ही है. या आपको मैं कहता हूँ अच्छा अंडे ले आओ, तो आप थोड़ी कहोगे मैं 2 किलो अंडे ले आया हूं. फिर क्या करोगे? डजन, यानी गिन के. हाउ मेनी एग्स मेक 1 डजन? 12. तो आप कहोगे जी मैं 12 अंडे गिन के रखे और आपने कहा मैं ये ले. सो यू यूज अ डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द कॉमन लाइफ. नाउ कमिंग बैक टू द केमिस्ट्री. आप केमिस्ट्री में मुझे 1 किलो राइस ला के दोगे, आप कहोगे दिस इज 1 kg ऑफ द राइस. आई विल से नो आई डोंट नो. टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ राइस आर देयर. आप अंडे ले आओगे, कहोगे मैं 1 डजन एग्स आई हैव ब्रॉट यू. आई विल से आई डोंट नो. टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ एग्स यू हैव ब्रॉट मी. आप 2 लीटर पेट्रोल ले आओगे. आई विल से नो आई डोंट नो. टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ पेट्रोल यू हैव ब्रॉट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन केमिस्ट्री आप क्यों लेट आते हैं? किधर? सो इन केमिस्ट्री. वालेकुम अस्सलाम. आप क्यों लेट आए हैं? अब जो काम की बात थी वो तो मैंने बता दी. मोल्स में जो काम की बात थी जी. सो सुन ले दोबारा. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मोल्स हमारी केमिस्ट्री की एक कैलकुलेटिंग यूनिट है. मैंने अभी मिसाल दिया. इफ यू गो एंड गेट राइस फ्रॉम द मार्केट, तो आप उसकी कैलकुलेटिंग यूनिट क्या लेते हो? ग्राम या किलोग्राम? कि मैं 2 किलोग्राम राइस ले आया हूँ, 1 किलोग्राम ले आया हूँ. अगर आप पानी लेने जाते हो तो आप फिर किलोग्राम नहीं, उसका लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम लेते हो कि 2 लीटर पानी ले आओ, 3 लीटर ले आओ. दूध है तो इसी तरह लीटर्स में. अगर अंडे लेने जाते हो तो वो क्या करते हो? गिन के लेते हो. इतने दर्जन ले आया हूँ, इतने दर्जन ले आया हूँ. राइट. सो every every different thing has a different calculating unit in the common life. But in chemistry when you come and you see कि जी मैं 1 दर्जन अंडे ले आया हूँ, I will say no, I do not understand दर्जन कितना होता है. Just tell me how many moles of eggs you have brought me. आप कहते हो जी मैं 2 किलो चावल ले आया हूँ. मैं कहता हूँ मुझे 2 किलो का नहीं पता, मुझे बताओ ये जो चावल लाए हो ये कितने मोल. आप कहते हो मैं 2 लीटर दूध ले आया हूँ. आई से मुझे लीटर का नहीं पता, ये दूध कितने मोल्स है. आई नाउ यू अंडरस्टैंड. तो मोल्स बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर एक कैलकुलेटिंग यूनिट है. तो ये मैंने इसलिए भी आपको बताया कि अब यहां से ऑनवर्ड आपने सोच लेना है कि केमिस्ट्री में कोई बंदा मुझे वॉल्यूम बताए, मास बताए,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए, मैंने फौरन उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, क्योंकि केमिस्ट के होते हुए आप सिर्फ एक ही चीज अंडरस्टैंड करते हो कि ये मोल्स कितने हैं। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में मोल्स की 3 डेफिनेशंस है, और फिर वर्ड्स में भी और उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी, तो वो अभी मैं बताने लगा हूं। वो 3 डेफिनेशंस क्या है, सुनिए जरा। नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, any substance containing 6.02 times 10 to the power 23 particles. Particles mean atoms or molecules. Is equal to 1 mole of that substance. That is the first definition, bachcho. And 6.02, this is a fixed number known as Avogadro's number. 6.02 times 10 to the power 23 is equal to Avogadro's constant. So this is the first definition, bachcho, कि whenever you take this much particles, yani Avogadro's number of particles of any substance, that makes 1 mole of that substance. मिसाल के तौर पे ये जो आपकी कॉपी है आमना, ये जो आपकी कॉपी है, every matter we have learned कि every matter is consisting of particles. इस वक्त अगर आपकी कॉपी के particles अगर मैं काउंट कर लूं और वो नंबर बने 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23, तो आपके पास जो कॉपी है, जो नोटबुक है, वो उसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल. What is your name? Umama, now your register seems slightly bigger, or not slightly, categorically bigger than Amna's notebook. And if we count the number of particles of your notebook, and they are found to be 2 times of Avogadro's number. So you are having how many moles of notebook? 2 moles of notebook. So I hope you got my point. Whenever something has 6.02 times 10 to the power 23 particles, that makes 1 mole of that substance. मैं लेट से पेन को एक पार्टिकल मान लूं, तो जब मेरे पास एप्पल के 6.02 टाइम्स 10 टू पावर 23 पेन्स आ जाएंगे, तो वो पेन का 1 मोल बन जाएगा. ये जो डेस्क जिस पे आप बैठे हुए हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स. इफ वी काउंट दीज पार्टिकल्स एंड लेट से the Amna's desk has 6.02 times 10 to the power 23 particles, so it means Amna's desk having how many moles? Equal to 1. So this is what I said, but this is the word's definition. If you look at in maths, so it says number of particles. Particles mean molecules or atoms, is equal to number of moles multiplied by Avogadro's constant, 6.02 times 10 to the power 23. So it's not something new. वही जो ऊपर वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को सब्जेक्ट बना लूं बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स फिर किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, yes, Avogadro's constant, 6.02 times 10 to the power 23. So this is the mathematical expression of above definition. So this is the first definition, and these 2 formulas will be using again and again. So simple way is, if you have 1 mole multiplied by 6.02 times 10 to the power 23. If you have a 2 mole of substance, 2 multiplied by 3 moles of, so जितने moles होंगे उतने 6.02 times 10 to the power 23 करोगे, तो number of particles या number of molecules आ जाएंगे. Again I must tell you, particles mean atoms or molecules. Okay, particles mean atoms or molecules.
Right. So that was the first definition of the moles. Now come to the number two. आप कहते हैं नहीं गिनने वाला काम मुश्किल है इफ यू से इतने पार्टिकल्स मेक वन मोल कोई और तरीका बताएं तो लिखिए जरा relative atomic mass यानी AR और relative molecular mass यानी MR in grams MR of a substance in grams is equal to 1 mole of that substance. So that was the गिनने वाला तरीका ना कि you count the particles and then tell me how many moles are there. This is not the गिनने वाला. This is the mass relationship. Like now let me explain what is the meaning of this. You know AR जो होता है वो एक एलिमेंट का होता है usually. MR जो होता है वो एक कंपाउंड का होता है usually. Now let's see एक एलिमेंट है कार्बन और सोडियम एक कंपाउंड है जैसे वाटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सो व्हाट इज ही सेइंग कि instead of counting the particles what you do just go in the periodic table and see what is the atomic mass of carbon. Can you tell me what is the atomic mass of carbon? 12. So जितना atomic mass है उतने grams ले लो उस substance के तो वो एक मोल बन जाएगा यानी if I go and get 12 gram carbon that will be equal to what? 1 mole carbon. Do you get it? Similarly, if you talk about sodium, 1123. Now, what is the atomic mass of sodium? So, if I go and get 23 gram sodium, तो वो sodium का क्या हो जाएगा? 1 mole. That's a straightforward thing, right? So, you must know the relative atomic mass. Just take the same amount in grams. That'll be equal to 1 mole of that. In case of compounds, for example, water, तो AR तो नहीं होता ना इनका MR होता है. Let's calculate water's MR. What is water's MR? 1 times 2 for the hydrogen plus 16 for the oxygen. That makes 16 plus 2 is what? 18. So 18 gram water will be equal to 1 mole water. So if I ask one of you, okay, now I have to break my fast, go and get me water, 1 mole. So how many grams water you are going to bring? 18 gram of water. Okay. Carbon dioxide. If I ask you to go and get in mass carbon dioxide, so what is carbon's AR? 12 plus oxygen 16 times 2 is what? 44? 32 plus 44 1. gram of carbon dioxide if you get me, तो वो क्या होगा? 1 mole. I hope you got it what I'm saying. So अब तक इसको हम दे देते हैं. So इसका मतलब है कि mass in grams is equal to number of moles multiplied by AR or MR. Okay? In other words, यही जो मैंने words में लिखा है इसी को मैंने mathematical form में लिख दिया. Now if I rearrange it, तो number of moles किसके equal हो जाएंगे? Mass in grams over divided by AR or MR. Okay? Got it?
ओके, थर्ड वन। अब तक मैंने आपको कहा कि इफ यू गो, लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि देयर इज अ कार पार्क्ड आउटसाइड, उसके साइलेंसर पे ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट्स हैं, वो कार्बन के हैं। गो एंड गेट मी वन मोल कार्बन। कितना कार्बन लाना है? देयर आर टू वेज टू गेट इट। या तो आप वेइंग बैलेंस ले जाओगे, उसे स्क्रैच करोगे, कार्बन का एआर कितना होता है 12, कितने ग्राम, जब वो हो जाएगा वे करके 12 ग्राम, तो मेरे पास ले आओगे, तो मुझे कहोगे नाउ इट इज 1 मोल कार्बन। या आप क्या करोगे, आपके पास वेइंग बैलेंस नहीं है, यू गो and I wish you can see the carbon atom. Let's assume we can see the carbon atom. One of the carbon atoms are so small we can't see them. I wish we can see them. Or let's assume we can see them. आप काउंट करोगे, एक एक कार्बन को अलग करोगे, कितने कार्बन गिन के लेके आओगे तो 1 मोल बन जाएगा? 6.02 टाइम्स 10 to the power, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो ये मुमकिन नहीं है फिजिकली, लाइक पॉसिबली ह्यूमन भी नहीं है, हम सारे लोग भी चले जाएं और गिनना शुरू कर दें, लेट्स से कार्बन हम देख सकते हैं, तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा हमने 6.0 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स कार्बन के निकाल के अलग करने में। लेट्स से कार्बन का साइज एक गोल्फ की बॉल जितना है, कार्बन एटम का साइज, तो गोल्फ की बॉल हम उठा के रखते जाएंगे, कितनी देर में इतनी बॉल्स इकट्ठी कर लेंगे हम सब, ये सारे लोग 25-30 लोग जा रहे हैं जी। 1 घंटा रोजा खुल जाएगा। यस, इट्स गोना टेक आवर लाइफ, इतना ज्यादा टाइम लगेगा। इट्स नॉट अबाउट द डेज और मंथ्स और द इयर्स, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स अ बिग नंबर। 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 का मतलब समझते हैं ना? 6.02 के बाद कितने जीरोस लगाने हैं? तो वो मिलियंस में नहीं, ट्रिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, पता नहीं किस में है ये नंबर। ठीक है, सो थर्ड डेफिनेशन, दिस इज फॉर द गैसेस ओनली। डेफिनेशन नंबर 3 फॉर गैसेस ओनली। Now, if I ask you, go get me a gas. So for gases only, 24,000 centimeter cube or 24 dm cube volume of a gas, of any gas, at room temperature and pressure, is equal to 1 mole of that substance. Okay. So for the gas, you just have to measure the volume, but at room temperature and pressure. Keep in mind, here is the condition के दो, जब आप गैस का वॉल्यूम लें तो क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। केमिस्ट्री में मैं बता देता हूं, रूम टेम्परेचर ऑलवेज टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 Kelvin. Okay, this is a fixed, and pressure is 1 atm, 1 atmosphere, or 1 times 10 to the power 5 Pascal. So whenever these conditions are there and you are taking 1 mole of that substance, that makes 1 mole of that gas. Okay, so volume of gas, but this is for the gases only. Okay, volume of gas is equal to number of moles multiplied by 24,000 अगर cm क्यूब में है, और 24 अगर dm क्यूब में है। And then if you rearrange, number of moles of a gas is equal to volume of gas divided by 24,000 centimeter cube, if you are taking the volume in cm cube. अगर dm क्यूब में लेंगे तो 24 dm क्यूब से डिवाइड कर दें।
Got it? So these are basically three definition of moles. Now I'm going to sum it up. What I said, I'm going to make a triangle. Okay, 1 mole is equal to what? Three things they are linked with: mass, volume, and number of molecules or number of particles. इन तीनों के साथ इसका लिंक है. क्या लिंक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर 1 मोल कितने होने चाहिए? 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23. वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 24 फॉर द गैस ओनली. ओके, 24,000 cm क्यूब और 24 dm क्यूब. और मास कितना होना चाहिए? AR और MR in what? In grams. Okay, so here it is. This triangle you have to make. और ये तीनों चीजें किससे लिंक्ड है? They are linked with 1 mole. Here it is. So 1 mole of any substance has these three linkages. कि उसका mass, उसका volume if it is a gas, and the number of molecules. And there are three formulas. Short करके लिख रहा हूं. Moles is equal to mass over AR or MR. Moles is equal to volume of gas over 24,000 cm cube, and moles is equal to number of particles, or number of atoms, number of molecules divided by 6.02 times 10 to the power 23. So we'll be using again and again these formulas. And I told you the logic, क्योंकि हर चीज केमिस्ट्री में मोल्स में लेनी होती है. Okay, so therefore we have to always go like this. Now I'm going to give you a few questions before we go to the next part. This is the thing which I told you, the definitions of moles, and then I gave you an idea because every time when we are doing the moles question, we have to do these conversions. Because in chemistry we do not accept any other unit than moles. हमें कोई मैथ्स बताएगा, जो भी सवाल पूछेगा, हम सवाल बाद में सोचेंगे. पहले सोचेंगे कि ये मास को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में. कोई हमें वॉल्यूम ऑफ गैस बताता है, वी आर नॉट गोना थिंक एनीथिंग एल्स. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू नंबर ऑफ मोल्स. कोई बताता है कि मैं जी 2 दर्जन अंडे ले आया हूं, हम कहते हैं वो दर्जन वर्जन का नहीं पता हमें भाई, मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो उसको डिवाइड कर दो कि 6.02 से तो मोल्स आ जाएंगे. देन वी स्टार्ट वर्किंग. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. मोल्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो मैंने सोचना नहीं है, तो आपको पहला काम जो बगैर सोचे समझे करना होगा वो क्या होगा? जो भी क्वेश्चन में यूनिट्स दी हुई हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर लेना है? मोल्स. ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जी. हाउ मैनी moles are present in, how many moles are present in part A? 0.10 gram of carbon. एक में करूंगा फिर बाकी आप खुद करेंगे. Look at this. Now what we are supposed to tell? Number of moles. And what is we have been given? Mass in grams. So we know we don't identify the mass in gram. Do we have any relationship between the mass in gram and moles? Yes. Let's use that. तो आप कहते हैं जी मेरे पास तो है, फार्मूला भी है और रेशो से भी कर सकता हूं, लेकिन अभी फार्मूला कर लेता हूं. तो आप कहते हैं जी मुझे मोल्स ऑफ कार्बन बताने हैं, इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखते हैं, मास ओवर कार्बन एक एलिमेंट है तो इसका AR होगा, मास ओवर AR ऑफ कार्बन. मास इज 0.10 divided by 12 is the AR. Hey Siri, what is 0.10 divided by 12?
0.1 divided by 12 is approximately 0.008333. Okay, 833 moles of carbon, right? So this is the answer, right? Now I'm going to give you, so every time I would insist कि आप पहले फॉर्मूला लिखें और फिर उसमें वैल्यू डालें ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी पार्ट. हर एक में मेन चीज वही है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 gram of carbon dioxide. C part, 300 cm cube of hydrogen gas, 3.01 times 10 to the power 23 molecules of oxygen gas. E part, 550 centimeter cube of carbon dioxide gas. F part, 1.05 times 10 to the power 24 26 molecules of water. Two point 8 grams of HCl. Yeah. Okay, please give it a shot.